I had the privilege of experience over the privilege of comfort. If you miss a bus, say Alhamdulillah, thank you God. वो बस ठुकने वाली थी. Whatever happens now, Varun, is right. Unlearning has been the larger learning. अल्लाह जानता है कि हम जो मांग रहे हैं वो नॉनसेंस मांग रहे हैं. इसको मत दो अभी, थोड़ा रो लेगा, रुक जाएगा रोके, बट इसका बेटर हो जाएगा. Correct. Most often in your life, your blessing is your curse. कुछ नया करते हैं ना, उससे uninformed बात इस दुनिया में नहीं. Worst line ever. Long term में जो तुमको बनाएगा वही चीज तुमको तोड़ेगा. Hussain Dalal is a writer. He's also someone who has very interesting perspectives. He's someone who has a perspective on elitism. He has a perspective on how human beings live and grow and evolve depending on the strata in which they're born in and evolve into. All of these are aspects of what we're talking about this week on Take a Pause with him. We're also tapping into his creative process and so much more. But before we go there, I want to make sure you hit subscribe and smash that bell icon. Go straight into my chat with Hussain. I'm thinking about how to start this conversation. Because हम दोनों मिले थे 5 years ago. Yeah. We had 5 years ago. And we were like, I think we had a lot of conversations about a lot of things. Yeah. Then the world went sideways and now we're doing a podcast. But what I never got to ask you was, why did you start writing? Simple, one sentence answer. I started writing because I just wanted to get by. Because I was doing lots of theatre. I was acting in lots of plays and I was not being able to support myself. And there were some writing gigs that were coming up. So I took a couple of gigs and then ended up finding a particular gig which became a big hit film. जिसकी बैक स्टोरी ओवर द इयर्स अलग अलग इंटरव्यूज में सबने सुनी है. तो इन वन सेंटेंस इट इज दैट माय फ्रेंड आकर्ष खुराना एंड आई डू लॉट ऑफ थिएटर टुगेदर. वी स्टिल डू लॉट ऑफ थिएटर टुगेदर. तो हम लोग नाटक कर रहे थे एंड आकर्ष मेड मी मीट पीपल फॉर राइटिंग गिग्स एंड जस्ट फॉर मी टू गेट बाय. व्हाइल दैट वाज हैपनिंग, अली फजल एंड आई वर डूइंग सम प्लेस टुगेदर एंड अली इज माय क्लोजेस्ट फ्रेंड, ओल्डेस्ट फ्रेंड. Ali and I were doing some theatre together and Ali met a director who was looking for a dialogue writer. And at the time I was living in Ali's house. And Ali was like, भाई ऐसा है कि मेरा दोस्त है वो एक्टर है लेकिन वो थोड़ा लिख लेता है, तुमको अगर राइटर चाहिए तो. And I went and met those people and wrote a few scenes and then they liked it and then that film was Yeh Jawaani Hai Deewani. And then everybody said I'm a writer. So I said, okay, let's play along. But that's the story. But if you think back before that, was there a point when you said, and I go back to you as a kid, was there something that you said, ये बनना है बड़े होके या क्रिकेटर बनना था? क्रिकेटर बनना था. हाँ. ठीक है, सचिन तेंदुलकर बनना था सबको. हाँ. मतलब मुझे तो सचिन तेंदुलकर बनना था. मैं बहुत बैट्स खरीदता था. Whenever my father would ask me or my mother would ask me कि what do you want, it would be a cricket bat. बहुत क्रिकेट बैट्स थी मेरे पास. टैलेंट के अलावा मेरे पास सब कुछ था. बैट, ग्लव्स, पैड्स, हेलमेट, सब कुछ था मेरे पास. सिर्फ हुनर नहीं था. तो क्रिकेटर बनना था मुझे. फिर क्रिकेटर बनना था, फिर वो नहीं हुआ. ओवरवेट किड था मैं तो उस हिसाब से. फिर मुझे बनना था, उसका मेरे को बनना था डेविड बेकम. मैं एस्पिरेशन हमेशा हाई रखा हूँ मैंने. स्पोर्ट्स में रखा हूँ. फॉर अ शॉर्ट फैट गाय माय एस्पिरेशन इन स्पोर्ट हैज बीन वर्ल्ड क्लास. तो मैं सचिन से गया डेविड बेकम. सब फुटबॉल बहुत खेला, बहुत साल खेला. क्रिकेट फुटबॉल में भी बहुत इट्स माई लाइक लव. बट देन ऑल्सो आई रियलाइज कि फुटबॉल में भी अपना नहीं, हुनर के अलावा बाकी सब अपना सही है. फिर मैंने क्या सिंप्लीफाई किया, फिर मुझे बनना था शाहरुख खान. तो मतलब सिंप्लीफाई करता हूँ, जो इंडिया वालों को समझ में आवे ऐसा करो. तो फिर वो बनना था. फिर नाटक में फेल हो रहा था तो अब ये फिल्म लिखी एक जो चली हम यहाँ है. एक चीज है ना कि जब भी कोई मूवी देखता हूँ विच यू रिटन, इट्स ऑलमोस्ट लाइक, and this is a chat which we were having before we started this recording, कि बोलते ना कि डायलॉग रियल लगना चाहिए, डायलॉग नहीं लगना चाहिए.
And वो आता है from observation from. So observation was always a thing. So I always feel वक्त के हिसाब से शब्द बदलते हैं. इसमें थोड़ा लंबा जवाब दूंगा, पॉडकास्ट में बातें कर सकते हैं. वक्त के हिसाब से शब्द कैसे बदलते हैं कि बचपन में बच्चा, सब बच्चों के बीच में एक बच्चा थोड़ा अलग होता है तो लोग बोलते हैं एड़ा है यार. अपन तो ऐसे स्कूल में, अपन पॉश स्कूल में नहीं गए ना, तो एड़ा है, कुछ भी खिड़की के बाहर देख के सोचता है. वो जब बच्चा कामयाब हो जाता है ना, लोग बोलते हैं एक्सेंट्रिक है, सो क्रिएटिव, इज अ मैवरिक. मैं वो बच्चा था बचपन में, तो मेरे को टीचर मम्मी को बुलाती थी और बोलती थी कि तुम्हारा बेटा ना खिड़की के बाहर बहुत दिखता है और उसके पास नहीं है. उसके पास कुछ नहीं है देने को समाज को, क्योंकि वो कुछ नहीं देता किसी को. वो मतलब ना लिखता है ना वो बुक्स लाता है. मैं बुक्स नहीं लेके जाता था स्कूल. सो ऑब्जर्वेशन वाज माय मोस्ट फेवरेट थिंग. तो मैं बचपन में रैंडम चीज़ों पे ट्रिप करता हूँ. मैं जिंदगी भर मैंने इन चीज़ों पे ट्रिप किया है. और तो लाइक यू आर सेइंग, ऑब्जर्वेशन वाज ऑलवेज अ थिंग, बट अप अंटिल perceived success, it was a disadvantage. It was a distraction. It was a, then it was like, oh, you're so observant. And I was like, oh, hey, I'm an artist. But yeah, I used to trip on, like, when I would watch cricket or watch football or watch anything, I would be like, oh, that detail, that thing. But because maybe that's how sometimes you're aligned. So yeah, observation, yes, to answer your question. But yeah, it changed. The word changed. Observant was earlier, just to, क्या बोलते हैं, short answer in brief. It was distracted. Hussain is always distracted. Then became Hussain is very observant. So words changed. But distracted बुरी चीज नहीं है. Like I was a distracted kid. I still am a distracted person. Boss. It's the best thing in the world. Boss. You're constantly entertained. I am constantly entertained. You can't hurt me because mostly I'll forget. Okay, so if you say something really nasty to me for 10 minutes, I'll be like, bhul gaya, right? So a few years ago, when I was 9 years old, I was diagnosed with extreme OCD as a kid. Something happened and my mother was amazing enough to understand mental health when I was 9 years old, which is 2008, right? तभी तो किसी को mental health समझ में भी नहीं आता था. But I was diagnosed and I was very hyper as a kid. So that eventually became ADD, right? And I'm okay understanding ADD. So I will ask me a question, I'll go off on another answer, then I'll find my way back. Correct. But I think observant and distracted are the most important aspects of life, because this whole thing of being in the moment and all is cute on Instagram. But it's okay to not be in the moment also sometimes. It's okay to think about things that are different. It also keeps you, I think it also helps you survive situations. For me, if I was in a really boring class, I would imagine someone in diapers. Boss. Think of an adult in diapers. It is the most entertaining thing, right? Yeah, no. तो बचपन से मेरा था कि if I'm bored, teacher diaper में. I cannot tell you, Varun, I mostly get through life by not being there. Explain that. Like, so the most oldest thing, my school teachers knew it and people who are very close to me know it, is that because of my ADD or my restlessness or whatever now the shabd jo bhi ho, I cannot do anything if you leave me alone to do it. Unless it is ki I love running, so I'll go running or playing sport because everybody's playing sport. If you leave me in a room and say ye kar lena, to chance nahi hai. So over the years my teachers sit me down and say ye chapter mein ye hai beta Hussain, dekho aisa hai ki ye hota hai, because I can only remember what is told to me or what you show me. If you give me something to read and say isko assess karke wapas aana, now this is where the great punch of life, this is, मैं आपको थोड़ी देर पहले ही बता रहा था ना वहाँ पे कि the things that you run away from the most visit you again in ways that you cannot avoid them. What is my job? Reading scripts. Correct. So I have found ways. So like I mostly when I'm working in, like we work, Abbas, my older brother, Abbas and I, we run a company called ADHD Studios, which is basically
Abbas Dalal, Hussain Dalal, and also we both our own ADHDs, Yeah. which is what I was going to ask you. severe and intense. It's not some joke. Hmm. It's like I have it, he has it. And when we're working in a team, what we do is we'll always hear something or do something while we're doing something else. Hmm. So it's perfectly normal for me to play FIFA while I'm hearing a script. In fact, if you don't let me play FIFA and you tell me a story, I will not remember it. Because I'm doing this full focus, I'm completely understanding what you're saying. If you give me one job, na, मैं गया. So I have to stay in a state of, like today, this is fantastic because बात करना मेरा favorite, one of my top 5 favorite things में से है कि बकचोदी, कि ज्ञान कहीं जाके दे दो कुछ. So I'm very excited today. I've told my wife, I said मेरे को बहुत मजा आने वाला है, मैं बात करने जा रहा हूँ. ये कितनी सही चीजें हम बातें करेंगे. But otherwise, distraction is my boss. I don't remember if a film has not affected me deeply. There's only 2 categories in my life. Either something's affected me deeply or I don't remember it. Because I've left, no? Yeah. मैं बैठा पूरा बैठा मैं 3 घंटा बैठा मैं. मेरे को एक सीन याद नहीं है. Funniest, last to close this question. Yes. So many times I'm traveling somewhere or in a dukan somewhere and somebody will come and say, Hussain, hi, ये वो आपकी वो वाली लाइन बहुत खूबसूरत लगी. That line is one of my favorite lines. And I'm always like, मेरे को ना घंटा याद नहीं है कि वो लाइन कौन सी पिक्चर की है और कहाँ से. तो मैं ना पहले 10 मिनट सिर्फ पकड़ रहा हूँ कि ये मेरे को बना रहा है, मेरे को ये आदमी कि ये शायद लाइन में लिखी ही ना हो, ये मेरे को मॉक कर रहा है क्या. Because I don't remember. So many times, right? You don't. So for me, that is also a thing. So yeah, distraction and then getting through life like this. You know, the unique thing about observation is that you're not just entertained, but you get to, because actually if you notice properly, you see people how they are after some time. Okay? That layer goes off. You slowly will develop this filter to say, ये बंदा ऐसा है. You can make out. और ये बंदा ऐसा है, ये स्थिति ऐसी है, ये सिचुएशन ऐसी है. और मेरे को तो लगता है कि ऑब्जर्वेशन में 2 चीजें हैं. Of course, now depending on what kind of a day you're having, your worst demon is inside your head. On the bad anxiety days, I mean, to discuss mental health for 30 seconds. On the worst days, you're tripping on something that's not even important, that might never happen, right? Because that's how anxiety works. And on a good day, on something nice, or on a funny day, something funny, whatever it is, it's yours, right? And I'm in that 0% of the world's people का category जो अपने ये सारे observations बेच सकता है. मैं बेच देता हूँ ना eventually. तो मेरे लिए तो observation has worked out, I think. बिक भी जाता है. Yeah. You know, I think that's the only way I can understand it. Yeah. And I feel what also comes from that is that you're looking at it and saying, and I think back on this, right? Like, when you're a kid, observing is, I think for people, it's great. Like, till a point of time. Like, till below 10, you're seeing. And that's when people are saying, start getting focused. Correct. And we tell people that being distracted is bad. Being focused is the most important thing. What is that road you're catching? Why are you looking here and there? वो घोड़े वाला problem. But then you lose imagination, no? Yeah. I mean, the only thing I understand, the way I understand it is about formal education. I'll always say that in the way we teach kids how to study, हम लोग हमेशा बोलते हैं कि you have to remember this. So we teach our children that you have to remember this. Yeah. What we don't teach our kids is that no matter how hard you try, there are some things that you can't forget. If we teach our children how to forget, there'll be lesser fights, lesser wars, lesser hate, lesser trouble in the world. We have to teach kids how to forget, not to remember. जो ज़रूरी है ना, हम survivors हैं. हम as an animal हम survivor हैं. तो जो ज़रूरी है वो तो याद रहेगा ही. भूल जाना सिखाना पड़ेगा बच्चों को. तो मेरा तो उल्टा प्रॉब्लम है उस हिसाब से. But that also depends on where you come from. Yeah, of course. Oh, अरे favorite topic. Because it does. I think everybody, हर कोई कुछ ना कुछ भूलना चाहता है,
हर कोई कुछ ना कुछ याद करना चाहता है, करेक्ट. बट वो क्या है, डिपेंड्स ऑन वेयर यू कम फ्रॉम. Yeah. I feel everything that happens to you makes you a certain way, correct? तो अपने को फंडामेंटल्स मालूम है. डिसीजन मेकिंग आई थिंक तभी ही बेटर होता है जब सिचुएशन मुश्किल होती है, क्योंकि आसान सिचुएशन क्रिएट करती है एक कमाल की प्रिविलेज चीज़ों के टॉप लिस्ट में एक चीज़ है कंफ्यूजन. कंफ्यूजन इज समथिंग दैट यू कैन ओनली इफ यू कैन अफोर्ड इट. कि मैं कंफ्यूज्ड हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं कंफ्यूज्ड हूँ कि मुझे क्या खाना है. कंफ्यूजन कम्स फ्रॉम चॉइस कम्स फ्रॉम प्रिविलेज. दैट ऑफन एंड्स अप रेजिंग confused privileged kids. Now I don't have an option. See, everybody has to live the life that given to them. तुमको जो दिया है भाई वही, अच्छा लगे या बुरा लगे हुए, करेक्ट, तुमको जो आइटम दिया है वही जीना पड़ेगा. चॉइस ना होना ना मेरे हिसाब से सर्टेन एज तक बहुत अच्छी चीज होती है बच्चों के लिए, कि बहुत ज्यादा चॉइस होनी चाहिए. आई एम नॉट बीइंग अ टायरेंट, दिस इज नॉट अबाउट दिस कॉन्वर्सेशन, नॉट अबाउट पेरेंटिंग, बट ज्यादा चॉइस होना ना प्रिविलेज बढ़ाएगा और बच्चे कंफ्यूज बड़े होते हैं. तो मेरे को लगता है वैल्यू समटाइम नॉट हैविंग अ चॉइस इज कूल. यही है बेटा, खा लो. यू नो, आई फील दैट इज अ करेक्ट अप्रोच आल्सो. And actually, if you think about it, like when I was growing up, the option of choice also depended on where you were, were you in a city or in a small town. I grew up in a small town. मेरे यहाँ तो मतलब even if you had privilege, there was no access. Correct. The problem now is everybody supposedly has access, but they don't necessarily have access, because you can see everything that you can get, but you might not be able to get it, which is worse. So it's interesting, but it's also so what you said, it has about 3 lanes. I'm thinking which one to go into. One lane I'll go into, which is that today everything's in front of you, right? Yeah. Which is why there isn't real superstardom. Because you know what that dude ate for breakfast now. Yeah. Where's the mystery? Yeah. Correct. Same logic को थोड़ा आगे बढ़ा के जिसके पास 4G 5G है वो अब कवि है. ठीक है. जिसके पास इंटरनेट है उसके पास ओपिनियन है. ठीक है, सही गलत तो चलो तो अपने को नहीं मालूम ना, बट आई एम सेइंग ये एक्सेसिबिलिटी वाली बात बहुत सही है. बिकॉज जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना कि हिंदुस्तान में 2 ही क्लास है, मिडिल क्लास और गरीब. अमीर तो एक कॉन्सेप्ट है ना, जो मतलब बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा अमीर लोग हैं, लेकिन कहानियां तो तुमको. और इसमें स्वाद वाली बात यह है कि अक्सर जब तुम किसी बहुत अमीर बच्चे से मिलते हो ना तो बोलता है मिडिल क्लास. माय अपब्रिंगिंग वाज वेरी सिंपल, वी जस्ट हैड 3 cars एंड अ हाउस एंड एसी. बड़े ये अमीर लोगों की चीजें होती हैं. बड़े घर होना बहुत अमीर चीज होती है. यू नो कि आई वाज क्वारंटाइन होने के लिए घर चाहिए, क्वारंटाइन होने के लिए घर चाहिए. सो आई फील कि एक्सेसिबिलिटी वाली बात जो है, स्मॉल टाउन में एक्सेसिबिलिटी नहीं थी, उससे ज्यादा दर्द था बड़े शहर के गरीब लोग, जो सब सामने दिख रहा है लेकिन अपना नहीं है और मिलेगा नहीं. तो आई फील ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है. तुम कहाँ बड़े होते हो उस हिसाब से तुमको क्या नहीं मिला, क्या तुमने पाने की कोशिश की, और सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है ना एथिकली कि क्यों पाने की कोशिश की. मेरे को ये चीज चाहिए जस्ट बिकॉज. करेक्ट. जस्ट बिकॉज में जिंदगी खराब हो जाती है. तो आई फील जस्ट बिकॉज के चक्कर में बहुत बच्चे जिंदगी वो कर देते हैं. And it also shows you what you want to, like, I was thinking कि बचपन में for me the most entertaining part was कि एक पॉइंट में before satellite television संडे शाम को डीडी मेट्रो पे MTV आता था 2 घंटे के लिए. So I would record that and watch that on loop. because घर पे VCR था, चलो that was my music television. Correct. फिर MTV channel भी आया, only watch that. My reasoning to come to Bombay was singular. I wanted to work for MTV. वाह. मेरा और कुछ नहीं था क्योंकि वो ही देखा था. बट एक्सेस नहीं था. बट सर आपकी कहानी कितनी खूबसूरती से एक चीज एक्सप्लेन करती है. अगर आपने 25 चैनल देखे होते ना तो आप घर पे बैठे रहते कि ये करूं या वो. करेक्ट. 10 साल और निकल जाते. कम ऑप्शन था ना, तो आदमी निकला और
दिमाग स्थिर रहता है। और आई एम टेलिंग यू, ऑप्शन ना होना, मेरे पास एक्टिंग कर रहे थे नाटक में, वो जिंदगी भर कर पाऊँ वो ऑप्शन नहीं था। घर ही नहीं चल रहा है, यू नो, कुछ हो ही नहीं रहा है, पैसे ही नहीं है। तो ऑप्शन ना होने की वजह से मैंने एक पिक्चर लिखी जो चल गई। अब मैं हैप्पीली एक्टिंग राइटिंग करता हूँ। ऑप्शन ना होना अक्सर मेरे को लगता है एडवांटेज होता है, मेरे को तो जितना समझ में आता है उस हिसाब से। So you haven't missed the bus. I've always missed the bus. Listen, boss, I have always missed the bus. When kids were going to college, I was not being able to go to college. When kids were going to the gym to become hero, I was not going to the gym because gyms are expensive, guys. I always missed the bus. But that's why I feel like, it's an arrogant thing to say, but the joke is that I didn't need that bus. And I have a car, a cycle, whatever, and I make it faster wherever. And literally this metaphor, I will sort of open it out in this conversation, which is that स्कूल के ऊपर का एजुकेशन, उसके ऊपर का एजुकेशन, उसके ऊपर का एजुकेशन, स्कूल, उसके ऊपर का एजुकेशन, लोग गए एजुकेशन में मिस द बस। तो काम करने लगा, फ्रेंड्स वर गोइंग आउट पार्टिंग, कुडंट गो, मिस द बस, और काम कर रहा था। फ्रेंड्स वर हैविंग ग्रेट लाइव्स, traveling is a thing young rich people do. They go for vacations. No vacations for the first, between the age of 14 to 24. No vacations. Missed the bus. Then friends got more educated, other people. But by the time I was 30, all the buses I had missed had made me someone who was hiring people who had caught all the buses. Yeah. And film school के बच्चे आ रहे थे कि NYFA में हमने Stanislavski पढ़ के आए हैं, 3-act structure. And they got the bus. I missed the bus. But I had the privilege, interesting word, the privilege of experience over the privilege of comfort. So I could sit them down and say, बेटे वो डिग्री बहुत अच्छी है, दीवार पे लगाना, घर वालों को दिखाना, उसका कोई वैल्यू नहीं है। अब आओ जरा इंटरवल के साथ कैसे लिखते बताता हूँ। So for me, the greatest gift that God gave me is He made me miss every bus that was not important for me. Which takes me to my largest life philosophy. If you miss a bus, say Alhamdulillah, thank you God. वो बस ठोकने वाली थी। If whatever happens now, Varun, is right. What didn't happen was wrong. But because the way we are conditioned ना, we are made to believe कि ये नहीं हुआ, shit, ये तो बहुत बुरा हो गया यार, ये होना चाहिए था। बेटे जो हुआ वही सही है, जो तू चाह रहा था ना उसमें बहुत बड़े पंगे हो सकते थे। So I feel that I'm actually very grateful for all the buses I missed. That's so true. I'm trying to remember all the buses I missed. I'm sure. And you must have missed many buses. मैंने ना weirdest 2 buses I can think of. I wanted to go to the US to study because a girl I was dating was going to the US to a university. Standard. It's correct. 18-year-old आदमी सही चल रहा है, हाँ. 18-year-old problem. फिर बट पढ़ाई नहीं करना था for engineering entrance. So I went for a coaching center में गया था. In 2 months of coaching, I remember one thing: half the answers are B, half the answers are C. Probability of B and C are high. तो क्या B डाला, C डाला, निकल गया. In the entrance exam results, newspaper पे आता था उस टाइम पे. Only the first 60,000 people
come in the paper. My name was not in the first in 60,000. Now I had two options. Either I tell my parents or I don't tell my parents. I didn't tell them. And when that envelope finally came, कुछ post पे आता था. I burnt that envelope. I told my parents years later. They know it. I can put on record. मालूम है दोनों को. But I think back on that, and I think back on the fact that I eventually, because of that, I eventually went to engineering. I had to get to the scenario where my father had to figure the money to pay that management quota thing, get me into it, do that. But it got me onto the track where I actually realized that this was not something I wanted to do anyway. By that time, result आया था तो breakup हो गया था. So that ship had anyway sailed. वो topic खत्म हो चुका था. हाँ. But I think it's so true. If you think about the choices, like I don't forget where I heard this. I said that, you know, when you say, "Oh, I wish this had happened," yeah, you are then wishing that everything good that happened after that also might not have happened. Exactly. Uncanny. Philosophically, मैं ये कहता हूँ कि लोग मुझे अक्सर कहते हैं कि मुझे नहीं कहते, चलो दुनिया में हम कहते हैं कि मुझे ना उसकी जितनी कामयाबी चाहिए. बट क्या तू उसकी जितनी नाकामयाबी उठा पाएगा? मेरे को लोग बोलते रहे, हुसैन तेरा तो सबसे अच्छा चल रहा है. मेरा सुख चाहिए, ले लो. मेरा दुख उठा पाओगे? बहुत आसान होता है. अपन एक अकल से ना, वे वेरी लिमिटेड, वे ह्यूमन बीइंग्स, वी डोंट नो मच ना. दैट्स द होल पर्पस ऑफ दिस सिचुएशन. वो जो इतनी रॉन्ग चीजें तुम्हारे साथ होने वाली थी ना, वो टल गई हैं, और तुम उसका थैंक यू कभी नहीं बोलते. कि मैं चला जाता अमेरिका जाके ब्रेकअप होता, ब्रो तेरी क्या हालत होती. तू क्या हार्ड. वो टेरिबल यूनिवर्सिटी था, मतलब इतना गंदा था, मेरे को मालूम है कुछ नहीं होता उससे. करेक्ट. बट वो वही है, अक्सर तुम्हारे मर्जी का ना होना ना, इसमें मैं वापस आता हूँ पीछे वाले टॉपिक पे. अक्सर हमें बताओ ना, बच्चे ने कुछ मांगा उसके लिए गलत है, हम उसको नहीं देते हैं. सिमिलरली आई फील अल्लाह जानता है कि हम जो मांग रहे हैं वो नॉनसेंस मांग रहे हैं. इसको मत दो, अभी थोड़ा रो लेगा, रुक जाएगा, रोके, बट इसका बेटर हो जाएगा. करेक्ट. ये हम लोग ट्रस्ट क्यों नहीं करते? हम इतनी डीप बातें कर रहे हैं इंटरनेट पे अबाउट डिस्कवरी एंड लाइफ एंड लेटिंग गो, एंड ये सब क्यों नहीं समझते हम कि हमारी मर्जी का ना होना दुख नहीं है, सुख है. इतनी सरल बात है, बट खैर. तो ये सब पैकेज करके how do you actually write? So I have a very simple system, Varun. I love hanging out with my family, people, just we know, friends. You always have a story in your head, right? Somebody's given you a story to write. Somebody's given you normally I'm a hired writer, right? So मैं सीखा हूँ नया सर्विस प्रोवाइडर. तो आपके पास कहानी है, मैं उस पर स्क्रीन प्ले डायलॉग करूँगा. सो आई फील लाइक एक कमरे में बैठ के सोचना बहुत लास्ट स्टेज के लिए मैं रखता हूँ. अब्बास, माई ओल्डर ब्रदर, he and I, we write together. He's a screenplay का correct. He's got a very strong, he's a master आदमी है वो. In school, all my essays were written by Abbas, by the way. असली राइटर OG वो है. Yeah. So we leave our jamming till the end. We spend a lot of time observing and just watching random things. For example, I'll talk about something that's released already so that we don't have to hide anything. For example, Taaza Khabar is a show on Hotstar. It's based on a story my father used to tell Abbas and me. Okay? And my father was this big philosopher, God bless his soul. He was a poet. So when he told us about these people, my father had this knack where he would be like, वो आदमी ना इसके ऐसा था, ये लड़का बैठा ना, देख इसका जैकेट देख कैसा है, उसका जूता देख कैसा है, देख. And my father would always make me notice things. उसको देख, बेटा देख, उसको देख, क्या कैरेक्टर है वो देख, वो गाली दिए बगैर बात ही नहीं करता है. And we would watch it, right? That's where detail and characters come. Eventually जब रिव्यू लगते हैं या पिक्चर कोई देखता है या शो लोग बात डिटेल में होती है, क्योंकि कहानियां सिर्फ 7 हैं इस दुनिया में. हम ये वाली थ्योरी डिस्कस करते हैं अक्सर कि राइटिंग करके या राइटिंग से पहले से हम जानते हैं कि 7 या 10 टाइप की कहानी होती है. इट्स ऑलवेज इन हाउ यू से इट, राइट? सो दैट वे डिटेल इज व्हाट आई स्पेंड मोस्ट ऑफ माई टाइम.
क्योंकि कहानी जो भी हो वैसी कहानी 10,000 है. करेक्ट. हम क्या करने वाले हैं. और मेरे को नए का कोई फैसिनेशन नहीं है. मैं बस बताना चाहता हूँ दुनिया को एज अ राइटर कि कुछ नया करते हैं ना, उससे अनइन्फॉर्म्ड बात इस दुनिया में नहीं. वर्स्ट लाइन एवर. या तो अगर कोई तुम बोलता है ये तो हुआ है, ये नहीं करते, नया करते हैं, नया तो है ही नहीं. सूरज रोज निकला था, पिछले 10,000 साल से निकल रहा है, तो मत बैठ सनलाइट में, छोड़ दे, नया नहीं हो रहा कुछ, आज मत जा. तो नया इज समथिंग, इज अ नाइविटी. कोई अगर कहता है कि नया चाहिए तो वो नाइव है, वो नहीं जानते कि नया नहीं होता. गाइज, इट्स लाइक नॉट नोइंग. सो नए का मेरे को नहीं है. इट शुड जस्ट बी मजेदार. इट शुड सर्व द पर्पस ऑफ द स्टोरी. It should be in the genre that it needs to be in for the people paying for it. Fundamentally. If they give me 100% creative control, it should be in the genre I originally believe it should be in. With Taaza Khabar, it was a genre Abbas and I and Bhuvan and Rohit, we all agreed on and we enjoyed it together. So the observation was my whole life's observation. Those characters are from my life. His name is Vasant. Vasant was my dad's Man Friday friend, buddy, everything. Vasant used to drop me to school. And we used to say, Vasya, school जाते जाते मेरे को पेप्सी दिला, वो पीने का होता ना, that. So Vasya is that deeply embedded in my life for it to be like, hey, that looks legit. Vasya मेरे को स्कूल छोड़ता था. Because Vasya का काम क्या था? Vasya was nothing. Vasya was this Vasya, the original Vasya, the OG Vasya, was this guy who was just we used to want to help him because he was a hard alcoholic. So in order to keep him occupied, my dad would say कि इसको कुछ भी कराओ every day. Give him some work to do. Give him something to do. तो हुसैन का स्कूल छोड़ो. हुसैन का स्कूल किधर है? सामने. तो हुसैन वॉक कर रहा है, मेरे साथ वसिया वॉक कर रहा है. कि क्या बोलता है वसिया, क्या हुआ आज? बोले कुछ नहीं यार, ये बहुत टेंशन है मेरे को. तेरे को क्या टेंशन है? नहीं, वो 7.5 रुपया मैंने उधार लिया है उधर से. So full chat is happening, right? So that's how. So we spend all. I feel writing ना. So writing and typing में फर्क है. To answer your question, writing तो बाहर होती है, जिंदगी से होती है. Typing तो बैठ के कर लो 2 घंटे में. So I feel what writing and thinking is where I want to focus all my energy at. I really think that is which is why I was telling you earlier, I don't watch too many films. Not because I'm some arrogant creatively, like ऐसा कुछ नहीं है. मेरे को बस लगता है कि लोग जब फिल्म से निकलते हैं तो लोग कहते हैं बहुत मजेदार फिल्म थी, बिल्कुल जिंदगी की तरह थी. कोई बाहर निकल के ये नहीं कहता बहुत अच्छी फिल्म थी, बिल्कुल फिल्म की जैसी थी. ज्यादा फिल्म देख के ना फिल्में जैसी हो रही हैं. करेक्ट. इसलिए पंगे हो रहे हैं, ओरिजिनलिटी का पंगा हो रहा है. तो आई फील जिंदगी जीते रहने का ऑब्जर्वेशन करके फिर एक पॉइंट पे लिख देते हैं हम लोग. हमारा प्रोसेस ये है. तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस लाइफ होना चाहिए, फिल्म नहीं होना चाहिए. कभी नहीं. कोई कमिंग बैक टू द नाइव पीपल हु सेड फ्रेशनेस. या कुछ फ्रेशनेस सिर्फ पर्सपेक्टिव में आती है. कहानी सिर्फ साथ होती है, बट बोलने के तरीके इन्फिनिट है. बोलने का तरीका तुम्हारा यूनिक होगा ही नहीं अगर तुम किसी और की फिल्म की तरह या किसी और की कहानी की तरह कहानी लिखते हो. तुम्हारा कभी होगा ही नहीं वो. तुम्हारा कैसे होगा? ये सब मैं ज्ञान दे रहा हूँ, ये सब मैंने स्टडी नहीं किया था. चल गई पिक्चर, तुमको रियलाइज हुआ कि हुसैन डोंट चेंज. नॉट चेंजिंग हैज बीन द लार्जर लर्निंग, अनलर्निंग हैज बीन द लार्जर लर्निंग. कितने भी खुलेगी पिक्चर, जिस दिन सोच के लिखा था पिक्चर डूब गई थी. नहीं सोचा था तो पिक्चर चल गई थी. तो आई फील लाइक जस्ट कीप लर्निंग, राइट, एंड कीप गेटिंग बेटर. But uniqueness will only come with a unique voice. There are no unique stories. To ask about unlearning. You said unlearning just now. Yeah. We're always taught. I think we've all taught how to educate ourselves. We're not technically taught how to learn. वो भी थोड़ा it comes naturally, it doesn't come naturally. But we're never taught to unlearn. Keep the मतलब hard disk में unlimited GB है वाला सिनेरियो चलता है. उसका एक ही सिंपल रीजन है, क्योंकि वो बिकता नहीं है. जैसे नफरत और लर्निंग सिखाई जाती है क्योंकि बिकती है. अनलर्निंग और मोहब्बत किसी इंस्टीट्यूट में सिखाई नहीं जाती क्योंकि बिकती नहीं. सिंपल. जिस दिन बिकेगा ना उस दिन सिखाएंगे. पर सीखोगे कैसे? बहुत सिंपल है.
सेल्फ इंपॉर्टेंस किल कर दोगे ना जिस दिन, उस दिन अनलर्निंग हो जाती है. मुझे ये पता है, मेरे साथ ये हुआ था, मैं इसका विक्टिम हूँ, मेरी जिंदगी में ये हुआ. छोड़ना है सब, क्या होता है? अनलर्न, अनलर्न इन अ सेकेंड. छोड़ना है, छोड़ना है. छोड़ना यार से बड़ी दवाई नहीं है इस दुनिया में. मैं अक्सर सीखा हूँ ये हुआ, यू नो वी गेट राइल्ड अप, ये हुआ मेरे साथ, मैं ये छोड़ना है. देखना उधर भी हुआ, उधर भी हुआ, उधर भी हुआ. छोड़ना है, छोड़ यार. फ्री हो गए तो. सिमिलरली मोहब्बत है ना, कह रहे वो आदमी ने मेरे को ना 5 साल पहले ऐसा बोला था. अब मैं वो हसद, यानी वो हसद इज नॉट रॉन्ग, हसद इज जेलसी, बट लाइक वो गुस्सा लेके चलूं, यू नो, मैं छोड़ दूं. 10 साल पहले या 5 साल पहले किसी ने मेरे को कुछ बोला था, मूड खराब होगा उसका यार. करेक्ट. सारी काइंडनेस, हम काइंडनेस बेचने के टाइम पे तो हम लोग सही बेच रहे हैं ना, इंटरनेट पे कैप्शन वैप्शन बना के. इनकॉर्पोरेट कर लेंगे ना तो फ्री हो जाएंगे. मेरे लाइफ में मेरे कोई एनिमीज नहीं है. आई फील आई डोंट हेट और अनलाइक एनीबडी. आई हैव नो एनिमीज for 2 reasons. One is because A, it's stupid to have enemies in this day and age. And B, I don't think I'm so important that somebody's hurt me so importantly that I need to tell them that it's too much time. Rather watch cricket, you know, or go for a run, you know, or whatever. Yeah. Tell me about running. I know that it comes up, and I know you. It comes up, yeah. So for a fat kid, and for who I am right now, I run a lot, okay? I'm obsessed with running. I don't run too much. I'm a very below average runner. I'm a lazy runner. I like the concept of running. So I like the concept. But I don't, it's not like I'm achieving anything in running. But I like marathon भागा? कभी नहीं भागा. कभी नहीं भागा. भागना है? नहीं, जिंदगी की दौड़ मेरे को रखती है बिजी. बट भागना है. लाइफ में एस्पिरेशन है कि किसी दिन मैराथन भागेंगे. बहुत डीपली मेरी एस्पिरेशन है. इंशाल्लाह मैराथन भागेंगे. तो मेरे को रनिंग बहुत पसंद है. मेरे को लगता है वो इट्स माई प्लेस टू थिंक. दैट बुक व्हाट आई टॉक अबाउट व्हेन आई टॉक अबाउट रनिंग, द मुराकामी बुक, I cannot tell you, I have not connected with a book. My school friend Rishabh Udgata gave me that book and he said, Hussain, you must read it. Because, you know, he's my बचपन दोस्त है मेरा. तो friends know your reality. So he said, तू बहुत pretend करता है ना भागने वागने का. ये ले जरा पढ़ ले. Boss. Running is the place where I get to think. I really do. So I don't use it as a fitness thing because I'm not fit. But I use it as it's my calmest place, if I may say so myself. I was once listening to a podcast where I think this person was a documentary filmmaker or researcher. Spoke of one tribe, and I forget, I think South American tribe mostly. I think they call the Amara tribe. For them, running is part of their spiritual existence. So they run towards the sun in the morning. They run towards sun. And the belief is, if you plug into things, you know, listen to a podcast, listen to music, do something. Think, run with nothing plugged in. Run with no aim. You're not thinking structure. You're not wearing, a fitness tracker. Nothing. You just run. And so this guy says that I was always a runner, but I once ran with someone from the tribe because I still exist. He said that run was by far the best run of my life because I felt something inside. Boss, that would be an absolute pleasure because over the years, the more smart devices I have and the more I can understand how I'm running, larger life philosophy, but I feel like हाँ काफी है. जब नहीं था, I remember we should do a lot more. Yeah. So 100 and like Eliud Kipchoge is one of the greatest athletes in the world, of course. Everybody knows him. But there's a great thing that Eliud Kipchoge said in a podcast. It's not a podcast, it's a running app thing that he says. And there's a 60-minute run with Eliud Kipchoge. And it's my favorite run. And 60 minutes is a lot of running for somebody like me. And it ends with him saying, run. And while you're running, remember, you have to work on the most important muscle that you need for running. Your heart.
keep your heart strong. Mm. Because this is not about running, this is about life. And I was like, wow. And for me, it's that. Like I always say कि जब भी वक्त अच्छा चल रहा हो ना, तो जेब बड़ी रख, सबको सब दे दे. वक्त अच्छा चल रहा हो ना, तो जेब बड़ी रख. वक्त बुरा चल रहा हो ना, तो दिल बड़ा रख. सबको सब बोलने दे, सबको सब करने दे. बुरा वक्त देखा है सबने, हमने. बुरे वक्त में ना तुम इंसान बुरे हो जाते हो, तुम्हारा कल्चर तुम गलत हो, तुम्हारी अपब्रिंगिंग गलत है, तुम्हारा वक्त बुरा चल रहा ना, तो दिल बड़ा रखो. Let people say whatever they want to say. Let them do whatever they want to do. जब तुम्हारा वक्त अच्छा हो ना, वो टाइम वेस्ट मत करना बदला लेने में. तब जेब बड़ी रखना, दे देना, फ्री हो जाओगे. I feel that somewhere is. बॉम्बे में एक सीखा था ना, लोड मत लो. हाँ, वही है, मत लो यार. क्योंकि वरुण, जो होना, जो खुदा ने डिसाइड किया है ना, उससे 1 मिलीमीटर इधर या उधर नहीं होगा. वही होगा. तू कुछ कर या ना कर, जो होना है ना वही होगा. तो तू चिल रहे यार, तू वैसे भी नहीं कर रहा है. I keep telling this, I keep saying this to artists especially because we have a tendency of believing हम कर रहे हैं. मैंने मेरी पिक्चर हिट करा दी, मेरी वजह से पिक्चर फ्लॉप हो गई. अगर मेरा काम खराब है तो मैं काम बेटर करूंगा. मेरा उतना ही काम है टू ट्राई टू बी बेटर एवरी डे. इवेंचुअलिटीज तो जो होना है वही होगा. एग्जैक्टली तेरे पे नहीं है भाई. वो मेरे को लगता है बहुत जरूरी चीज है समझाने के लिए लोग. अगेन सेल्फ इम्पोर्टेंस ना, but there are two sides, right? One is self importance, you go one stream. दूसरी तरफ सेल्फ डाउट. हाँ, अरे मुझसे तो होगा ही नहीं, मुझसे तो होगा ही नहीं. सर फ्लक्चुएशन में ही जिंदगी निकली है मेरी. मेरे दोस्त कहते हैं ना कि यू फ्लक्चुएट बिटवीन रियली हम्बल एंड अ कंप्लीट एरोगेंट. But is that struggle only? There are days when Varun, I wake up and I'm like, मुझसे नहीं होगा. I genuinely don't have it anymore, or I never had it, and maybe the world is misunderstood, and I don't have it, and oh God, what is it? And the worst of it, my brother and my mother and my wife get to hear of it because it's like, I'm like, नहीं हो रहा है, I failed as guys, हार गया मैं, you know. And then there are days when I'm like, and the best thing about the world is that your close friends, your people who know you, they always know that neither is you. Yeah. You know, there's a line in a play that we had written. Ali and I used to do a play together, and the line said that between his best deed, somewhere between his best deed and his worst sin is the man you know. Yeah. You know, so you're not your best deed. Yeah. You're not your worst sin. You're mediocre. Mediocrity is failure proof. I've always said it. If you're mediocre, you'll never be out of work. It's when you chase excellence, is when you fail, fall, hurt. So I've always tried to want excellence, which is why in my life graph, if you see, I've had all that. You swing on either side. Yeah. I do envy mediocrity. I genuinely envy it because it never has dull moments. Mediocrity never goes unemployed for 6-8 months. Yeah. Mediocrity stays stagnant. It's like it's there. I can't aspire to be mediocre because how do you do it? It's something I'd like to. I am mediocre most days. So ऐसा नहीं है कि मैं नहीं हो सकता हूँ. I am mediocre most days, right? Yeah. There are some days of excellence. There are some days of terrible work. Yeah. But we are all mediocre, I feel. Right? And mediocrity is something that we should not celebrate, I feel. थोड़ा celebration रोक लेना चाहिए. कि let's not celebrate mediocrity. थोड़ा better होके celebrate करते हैं. I feel it also stops you from, which is the one. What I enjoy watching is I watch those Hollywood reporter roundtables because I think those are the best conversations. Like I can watch them millions of times. Yeah. All the There's that one Robert De Niro clip that keeps going around. Yeah. He's like, does well, be calm. Becomes worse, and I will obviously not try to talk like Robert De Niro. कोई नहीं बोल सकता. Be calm. ऊपर हो, नीचे हो, stay calm. Same रहने का भाई मैं बता रहा हूँ वरुण. The greatest teaching I got from my culture and my house
was they never treated me differently on any day. Even today, even 2 nights ago, while I was coming here, my mother gave me 3 things to do. I said, Mama, I have an interview. She said, that's okay, but paneer lana hai jaake. I don't live with her. She lives in a different side of the city. She lives in town. I live in Bandra. But that is perhaps the reason that I keep telling my people around me that these realities keep my cinema relevant. कि कितनी बड़ी बातें कर लूँ ना मैं. जिस दिन मैं फिल्म फेयर जीता ना, फिल्म फेयर अवार्ड एक चीज़ होती है. फिल्म फेयर अवार्ड में एक्टिंग एक शॉर्ट फिल्म की थी, दोस्त ने बनाई थी, बहुत स्वीट फिल्म. जीता, मैंने फ़ोन किया मेरे डैड को, पापा इधर, हाँ बहुत अच्छे माशाल्लाह, वेरी गुड बेटा, ठीक है चलो मैं रखता हूँ, मैं ज़रा पान खाने जा रहा हूँ. आई कॉल माय मॉम, मामा हाँ वेरी गुड alhamdulillah, what is it for? I said it's for a short film. You'll watch it or what, mama? Yeah, no beta, see short films and all, no I can't. Lower middle class family. My mother goes for a Salman Khan film, first day first show. Short film उनको देखा कि वो बिजी लोग हैं, वो उनको घर वार बनाने, जिंदगी है उनकी, बिजी लोग हैं, उनको सेल्फ डिस्कवरी वाली ये सब 15-20 मिनट का दर्द नहीं चाहिए. My mother has not seen it. It's been 4 years since we made that film. This is a reality. This is the reality I live with, and it is the greatest gift of my life. That around me, na, I don't surround myself with people who say, "Hussain, you're amazing." Yeah. Like, I put on a lot of weight during the lockdown. After that, we went playing football with my school friends. I was not moving as well because I was fat. They've turned around and said, "Hey, अभी फिल्म स्टार कैसा खेल रहा है? अपने को वाह वाह बोलने का, लेकिन हो रहा नहीं है." It's such a mean thing to say. Yeah. Right? But that's who real people are. अब क्या तू अभी क्या फिल्म स्टार है तो तेरे को बोल नहीं सकते क्या कि तेरे से नहीं हो रहा है? And I was like, नहीं तू बोलना मेरे को. हाँ तो खेल रहा ना तू. हाँ तो अभी क्या? नहीं हम लोग खाली बोल रहे तेरे को. And they're laughing at me. I'm saying these are realities. Right? Yeah. These will keep me. And you need those people around you who will be real with you no matter what. Boss, the amount my friends mock my films. हाँ क्या बोला कैरेक्टर क्या बोला, क्या जिंदगी का क्या हुआ क्या? Because my friends are all मज़गाँव ना, यूरोपियन मज़गाँव. So my friends are real people. हाँ वो सुन हुसैन वो बहुत खराब है, हाँ भाई तेरी पिक्चर. So you know. We tell all kids, we tell everybody that as you get older also, that you need to stay grounded. That's one favorite term, na, ki stay grounded. But when you say stay grounded, I feel oftentimes you tell people ki nahi, which means that kharcha mat karo. I will become a minimalist. I will only wear one thing or two things, or I will only do X and Y things. That tends to become, I'm not saying there are wrong ways to do it. That becomes the solution. Correct. For me, and I relate to this so much because I have a group of friends. Same. I've known them since college. हम सब लोग साथ में बॉम्बे आए थे. Finished film school. बॉम्बे सब साथ में. We're all doing different things. I need that 2 hours with them every month. You have to. That keeps me grounded more than anything else in the world. It is your only reality. It is most often in your life, your blessing is your curse. लॉन्ग टर्म में जो तुमको बनाएगा वही चीज तुमको तोड़ेगा. इसकी वजह से ही बना था, वही चीज ज्यादा कर दी तो टूट गया. वो क्लासिक होता है. Whatever makes you breaks you, classic. These are the people that actually made you who you are, you know. Fundamentally, मैं थोड़ी फिल्म स्टार्स के साथ बड़ा हुआ, मैं थोड़ी पिक्चर देख के बड़ा हुआ, मैं तो कहानियां जी के बड़ा हुआ. जो कहानियां मैंने बेची और उस कहानियों में ये लोग थे, you know, इनका हक है मेरी कहानियों में, मेरी कहानियों पे. सो आई फील ये 2 घंटे तो मतलब आई डोंट गेट इनफ ऑफ द पीपल आई नो, बिकॉज बहुत जरूरी चीजें हैं ये. इससे ही तो अपन रिलेवेंट रहेंगे भाई, वरना रेलेवेंस इसकी वजह से जाती है. तुम एसी ऑन कर दो अगर और दरवाजे बंद कर लो वहां से. एंड एक और चीज होता है ना उससे कि you realize that you talk about the same stuff also, like half the time. Yeah.
It also refreshes what you sometimes tell yourself that you're trying to forget. Yeah. That's what, you come from this, we did this. The jokes are the same. Jokes are the same. And how many people, Varun, do we meet now in the movie business that you don't end up discussing art with? जिसको मिलो उसको पिक्चर डिस्कस करनी है, या शो डिस्कस करना है, या एक्टिंग डिस्कस करनी है, राइटिंग डिस्कस करनी है. यार मुझे नहीं करनी. मेरे को तू बता ना कि कौन से टूर्नामेंट में क्या हो रहा है. मेरे को तू बता ना मौसम कैसा है. मेरे को तू बता ना तेरे घर में क्या हो रहा है. क्योंकि पिक्चरों के बारे में लिख के तो पिक्चरें बननी नहीं वाली मेरी. करेक्ट. मेरा क्या है लर्निंग. वरुण, इट फ्रस्ट्रेट्स मी that when I go into rooms and I realize कि ये फिल्म वाले हैं जो फिल्म की बातें करते हैं और फिर फिल्म वाले हैं. अभी किधर जाने का. फिर बोलेंगे कुछ फ्रेश सुना. एक मिनट. तो वो तो आई फील बहुत बड़ी रियलिटी है जिससे हमें कभी छुपना ही नहीं चाहिए कि अच्छी पिक्चरें जिंदगी से बनती हैं. अच्छी पिक्चर देखने से अच्छी पिक्चर उतनी नहीं बनती. So then, would you say that if you not had a life with enough experiences, and the experiences again broad term, experience can be मैं travel कर रहा हूँ, correct. you won't be able to express yourself through writing something? Of course. मैं जो लिख पाया हूँ जिंदगी में या जो भी कर पाया हूँ वो मेरी जिंदगी की बदौलत है. वो कोई पिक्चर देख के थोड़ी लिखा है. पिक्चर देख के लिखोगे तो पिक्चर जैसा लगेगा यार, पकड़े जाओगे. देखिए हमने स्क्रिप्ट्स, मैं पढ़ता हूँ स्क्रिप्ट्स, पिक्चर जैसी लगती है. कोई बच्चे ने पिक्चर देख ली, फिल्म स्कूल गए, बहुत अच्छी जिंदगी जी, अमेरिका जाके आए, फिल्म जैसी फिल्म लिखी है. अब मैं क्या करूँ इसका. इसका मैं क्या करूँ, कैसे सॉल्व करूँ. इसमें जिंदगी ही नहीं है इस कहानी. और कट कॉपी पेस्ट होता है. तुम नहीं करते, तुम्हारा माइंड करता है कट कॉपी. मेरे अब्बा का शेर है कि किताबें बहुत मिलती हैं बाजार में. किताबें ना बहुत मिलती है बाजार में, कहानी कोई बेच रहा नहीं है अभी. कहानी तो जीनी पड़ेगी. किताब खरीद सकते. तो ये किताब खरीदने वाला मामला है. आई एम सेइंग यू शुड रीड, यू शुड वॉच, बट योर बाइबल टू बीइंग अ क्रिएटर should be meeting human beings, animals, just being in the world outside of the reading and the writing and the watching. Is that what you do when you take a pause? Of course. Absolutely. And I think it's my happiest thing to do something that's not cinema related or writing related. It's I like to shop. Unimportant things, nothing expensive. फालतू की चीजें. Eat, sit and chat, watch sport, watch movies that are made by none of us. None of us being the Mumbai, Hyderabad, Bangalore industries, the Chennai industries, the Kerala industries, whatever, all. Watching something that's made by somebody else, made by a whole different perspective. Watching something like that. But that also is the last thing I'll do before I sleep. While the day is alive, it has to be other things. It has to be walking. It has to be watching people walk. There is no greater pleasure in the world than sitting in one place and watching what all passes you by. I'm happy you said that, because I've had this, and I know people have said it in different ways, is that the 2 years of lockdown that we went through, you couldn't do that. And there was this entire conversation about saying, we will all be happy to work from home, connect with other people from home, VR pe chale jayenge, all that stuff. But what is the first thing people have done once they could go out? Is they met other people, they went to a shop to buy clothes, not buy it online. They, and this is not just because I read enough business media also, ki the business results show that. Sir, during the lockdown, 2 things came to my understanding. One was that I anyway hate meetings. I feel like let's meet to think se bada lie kuch nahi hai. Let's meet at 4 p.m. to think. अगर ख्याल मेरी लगाम में होते ना साहब,
तो वो घोड़ा होता वो ख्याल नहीं होता ठीक है कि मतलब राइट ले लेफ्ट ले, ख्याल है वो, उसको मैं 4 बजे नहीं सोच सकता हूँ यार तो लेट्स मीट टू थिंक वाला कैंसिल हो गया 2 साल कि जब ख्याल आया तब जूम कॉल कर लेंगे, तो उसमें मैं फ्री हो गया. आई डिड माई सम ऑफ द बेस्ट इंपॉर्टेंट वर्क केम ड्यूरिंग लॉकडाउन. And I'm a people's person, so I was so freaking not being able to deal with the fact that you couldn't meet people, man. So we had found a way of communicating through buildings and all with people, you know, because how do you do it? It was also the busiest time in my life. I thought I was just doing things that were never going to get made. None of it got made, okay? So it's not like I've achieved some great feat. But I just did random things and I just had to keep... For somebody like me who likes to just, when I go for a run, people tell me कि if you're going for a run, what's the duration of your run? And I'll say anything. आया तो आया. You know, for somebody like that, can't go means it was bizarre. I actually started enjoying being alone a little too much. I can totally hear you, because for me it was ulta. I've always lived alone my whole life. That time I had to go live with my folks. Best time. So I was living with family. Okay. But for me, it was being in your space. Basically, at some point you get so comfortable ki there was a point after which they said na ki initially you can't leave the apartment. Yeah. Then you're like, okay, you can't leave the building. The building, correct. Then it's like, okay, you can go out once in a while. तो मेरा ऐसा कि जाना क्यों है? क्यों जाना है सर? मैंने ना अभी मीटिंग करना वापस शुरू किया है. मैं जूम वाले फॉर्मेट को मैंने एंड तक खींचा. मैंने जूम वाली आइटम को 6 महीने पहले तक खींचा है, क्योंकि मैंने बोला कि जरूरत ही नहीं है, मीटिंग पे कुछ नहीं होता, ट्रैफिक में जितनी मेहनत होती है ना मेरी, उतनी मेरी नरेशन में नहीं होती. मैंने बोला ये but I also enjoyed being alone, and for me I feel I had my biggest creative spurt then. So I wrote a book in 8 months in the middle of lockdown. No, that's amazing. So that's 8 months. Amazing. सुबह उठता था 6 बजे, 6 से 7 लिखता था. I wake up my daughter for online school, and for उसका half entire nursery and half of junior kindergarten happened online. So I wake up 1 hour before. But what happened flip for me is that when I suddenly started to meet people again, it's different. It became it's different. You almost feel this thing inside you saying, why am I here? You know, that lockdown also tweaked people. I felt like it tweaked people. Changed you? Yeah, it changed you. Like it fundamentally changed the core of people. Like I've always been a loner and isolated person in my head. So मेरा ज़्यादा कुछ नहीं हुआ. मुझे लगा बाकी लोग are going through a lockdown. मैं तो लॉकडाउन में ही था ना. नहीं तो जिंदगी मेरे माइंड में ही थी. It was very tough on me. I asked Jose this, and Jose doesn't leave his house, right? So VJ Jose is the original social distancer because वो 15-16 साल से वही कर रहा है. घर पे ही है. वो बैंडा नहीं छोड़ता. He doesn't have a passport. I think recently got a passport. अभी finally. इतने सालों के बाद. वो कहीं नहीं जाना उसको. तो when I asked him, he's like, मैं तो हमेशा ही करता हूँ. I come from my house to MTV office, come back to my this thing. तो I was like, वो भी सही point है. क्योंकि मेरे लिए भी कुछ खास नहीं बदला था. चेक नहीं आ रहे थे किसी के भी, पैसे नहीं थे, वो प्रॉब्लम थी. उसके अलावा लाइफस्टाइल वाइज मेरा कुछ नहीं बदला था. क्योंकि क्या करता हूँ मैं, आई टोल्ड यू राइट नाउ, मैं कुछ नहीं करता हूँ. मैं लिखता हूँ घर पे, कोई बुलाए 3 में से 4 में से एक चीज पे जाता हूँ मैं. और फिल्म प्रीमियर्स अजीब ऑकवर्ड जगह है ना, इसलिए गोइंग टू वेडिंग एंड सिंग दूल्हा. तो कोई फिल्म प्रीमियर पे तो बोलेगा ना पिक्चर खराब है. तो क्यों जाते हैं हम फिल्म प्रीमियर पे? क्या मिलता है हमें कि आज तक तुमने निकला है कि तुम स्टेज से उतर का बाय द वे खाना अच्छा था लेकिन दूल्हा ये तो नहीं होता ना. तो पिक्चर में तुमको कोई फीडबैक देने वाला है, तो हम क्यों करते हैं? बट जाना पड़ता है कभी कभी जाते हैं. So do you think you can be a creative person by yourself? And I'm asking this because there is a genuineness to when you write, even when what you say is not your best work. Because I feel it's relatable. It could be a character I have seen somewhere. I think writing in democracy is the best kind of writing. Where Abbas bhai and I write, we have our assistants who kind of give us feedback on it. I think we should ask 5-6 people what they feel. But there's only 2 kinds of writing. One, when I know, Varun, that I'm pushing myself to make sense of something because I have to do it. And sometimes when something genuinely comes to me.
and you know the difference only in the quality. Some things come to you naturally, and when it doesn't come naturally, I make sure that we work very, very hard to make it competent, because I believe that hard work can solve lack of instinct in a certain piece. A certain piece has a lot more instinct, and certain pieces don't have instinct. That doesn't have instinct पे काम हो सकता है. ऐसा नहीं है कि वो मैं इतना डीप आ चुकी ये पेंटिंग खराब है तो खारिज कर दी जाए. इतना लग्जरी नहीं है मेरी. मेरे को पैसे लिए हैं मैंने लोगों से. So जो इंस्टिंक्ट पे नहीं आता है वो ठीक करना होता है. As a working responsible artist मैं आपको जो बता रहा हूँ. As an irresponsible artist I can say जो फील होता है वही करता हूँ, जो नहीं फील होता नहीं करता. ऐसा नहीं है. I'm a service provider. So when the instinct is कि मेरा instinct नहीं आ रहा है, I'll be like okay wait, I'll go back to the producer and I'll be like ये मेरा लग रहा है मुझे, let me fix it. I'm always very like that. I love the fact it's a service provider. मेरे को नया मिला है. मेरे को मेरे ही एक दोस्त ने किसने बोला यार मेरे को ये सर्विस प्रोवाइडर वाला यार देखो सर्विस it's coming to me. Zakir Bhai told me. Zakir Khan. Zakir Bhai, my closest friend. He's my Jan. He's like my older brother. He's like family to me. Zakir Bhai told me. He said, "Don't be a service provider. Be a क्या बोलते हैं आजकल young लोग? Creator." I said, "Yes sir, yes sir." So do you want to be a creator? I feel I could be. Yeah. I'm getting there. I'm thinking of some things. Yeah, coming up with some thoughts. I want to review shoes and gadgets on my own YouTube channel. Do you approve of that idea, Varun? Shoes is very interesting. I want to review soles and the bounce of running shoes and how the technology. I obsess. Yeah. I obsess over the kind of TPU, like the kind of foams that brands use, like the difference between Zoom X and Air Zoom and React foam with broken Zoom X or original Zoom X. Like I obsess. So here's my question. Is that because you're genuinely curious about it, or you enjoy it, or is it both? So there are things I obsess about which I think are completely not related to films. If you see my YouTube, I don't watch a single film actor, film writer, film review, film interview, My YouTube is cricket bats, random technologies, gadgets के अंदर के gadgets. That's what I want to create. Varun, I'm telling you. That's why my क्या बोलते हैं vocation. The gadgets के अंदर वाले gadgets is interesting because everybody reviews the most like okay नया phone आया इसको कर लो. But the one inside the gadget is actually the most interesting one. It's a fun one, and like I love watching gadget reviews. It's my everything. If I don't, Varun, I don't know. Last 10 साल में there's been a day when I've not watched a gadget review. At least one, if not 3. For me, like the unboxing videos are therapeutic. That just sound of that plastic coming off the box. MKBHD he's my hero. MKBHD. Yeah. Then Technical Guruji, Indian. Then मेरे को ऐसा लगता है कि ये सही चीजें हो रही हैं. तो ये करना है. I asked you this also because I feel that curiosity is such an important part of everything in life. Of life. If you are... Curiosity killed the cat. But what the cat found out before dying was a lot of fun. Very true. And nobody knows because the cat died. But what a time that cat was having. वो enjoy करते करते मरी थी बिल्ली. ये भी तो हो सकता है. Correct. You know. I can keep going on and on and on. Yeah. But this show, we have a standard rule. At some point, it gets around an hour. Yeah, and we must end. And we will end it. But we're also leaving almost the audience wanting for, let's do this again at some point of time. We'll continue this. I'm on. Deeper dive on foam and shoes. Yeah. And curiosity. But thank you so much, man. Thanks so much for coming. Varun, man, it's one of those things. I just want to close this by saying we met once and we stayed in touch throughout. Yeah. Right? And that's amazing. And met once in a random in a noisy conference room. Yeah. And said, "Yaar, Bapu, milte hain." So, listen, thank you. Thank you. Thanks a ton, man. Yeah.